other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure their availability for manufacturing in India
and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision
that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS
thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company
that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cut-off date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%,
20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax. That is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees. That is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. थैंक यू। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हेडलाइंस रही अर्थात कौन सब अर्थमंत्री पेड़ी खोली तार पूरा चित्र आम आपण देखा प्रति अपडेट आम आपण देवु। बजेट रे बड़ बड़ सब घोषणा होती क्यों क्षेत्र केते अनुदान होती तार चित्र आम देखा 12 लाख टंका पर्यंत
आयकर छाड़ ए हूँ बर्तमान समय सबुठु बड़ खबर 12 लाख टंका पर्यंत जदि आपणकर रोजगार रोचे ताहले आपणकु कौनसी टिकस पैठ करने पड़ो ना अर्थात 12 लाख पर्यंत टिकस छाड़ करिसेंती केंद्र सरकार बजेट रे आयकर को नहीं आसी बड़ घोषणा जहाँ को नहीं तमाम चर्चा होता 7,75,000 पुराना स्लाब रे रही अर्थात 7,75,000 पर्यंत टिकस दवाई पड़ू ना ए सीमा को बढ़ाई सरकार 12 लाख पर्यंत जदि आपणकर रोजगार अच्छी ताहले आपणकु कौनसी टिकस पैठ करने पड़ो ना वर्तमान समय देशवासी सबुठु बड़ खबर कारण बजेट रे आसी ए संक्रांतीय बड़ घोषणा करदाता मिली बड़ आश्वस्ति 12 लाख टंका पर्यंत जदि आपणकर आय अच्छी ताहले आपणकु कौनसी टिकस पैठ करने पड़ो ना पूर्व ए संक्रांत में तमाम चर्चा होता समस्त नजर में रही आयकर स्लाब रे सरकार कौन परिवर्तन करेंगे और यारी भितर बड़ खबर आसी कि 12 लाख पर्यंत जदि आपणकर रोजगार अच्छी अर्थात मासकू जदि आपणकर लक्षे टंका रोजगार ताहले आपणकु मध्य कोनोसी टिकस दवाई पड़ो ना ए हूँ वर्तमान समय सबुठु बड़ खबर बजेट जहाँ आसुची निश्चित भाव में वर्तमान समय बजेट को लेकिन समस्त भितर जो उत्साह थिला तो बजेट को नहीं बड़ खबर आसी मासिक 1 लाख आयकारी को टिकस पड़ोनी अर्थमंत्री बड़ घोषणा करिसेंती अर्थात ये गोटे बड़ घोषणा 12 रु 16 लाख जाए 15% टिकस मिल जहाँ बजेट को नहीं ब्रेकिंग आपण सामने रखुचु सेहीपरि 16 रु 20 लाख जाए 20% रहित आम देखु बजेट रे अर्थमंत्री जो बड़ घोषणा करिसेंती सहित बजेट रे आम देखिलु आहुरी मध्य बड़ घोषणा करा जायछि विभू कहीं अर्थमंत्री जो बड़ घोषणा करिसेंती कि आयकरदाता पई जो कथा अनुमान कर जाउतला ताहा एथर प्रतिफलन देखबा मिलिछि अन्यपटे बिहार पई मध्य बड़ घोषणा करा जायछि नीतीश को खुशी करबा पई एथर बजेट रे बड़ घोषणा करा जायछि बजेट रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देशर बजेट रे बिहार राज्य पई बड़ घोषणा करिसेंती अर्थमंत्री कहिसेंती राज्यर भविष्य को दृष्टि रखी चाहिदा को पूरण करिबा लागि एभली बड़ निष्पत्ति ने जायछि किंतु आयकर स्लैब को लेकिन समस्तंकर जो अपेक्षा थिला 24 लाख रु अधिक आय हेले 30% टिकस देवाक पड़िबो जहां बजेट को नहीं वर्तमान लेटेस्ट खबर आसुची बजेट रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ए बड़ घोषणा करिसेंती तो आर भितर 12 लाख टंका जाय आपनकु आय कोनोसी इनकम टैक्स देवाक पड़िबो नाही अर्थात 12 लाख टंका पर्यंत आयकर छाड़ नहीं बजेट रे अर्थमंत्री वर्तमान समय बड़ घोषणा करिसेंती आमे कहि परिबा आयकर दातांको पई ए गोटे खुशीर खबर 12 लाख टंका जाय कोनोसी आयकर देवाक पड़िबो नाही जहां को समस्त अपेक्षा थिला वार्षिक 12 लाख टंका आय जो मानक रही से को टैक्स देवाक पड़ो नहीं 12 रु 16 लाख जाए 15% 15% आप टिकस देवे से 16 रु 20 लाख जाए 20% और 20 रु 24 लाख जो मानकर से 25% टिकस देवे बोली अर्थमंत्री बड़ घोषणा करिसेंती नुआ टिकस व्यवस्था कौन रही केते आपण टिकस देवे से संक्रांतीय समस्त तथ्य आपण मानक सामने राजीव साहू वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट आम सहित जोड़ुंट श्रीजुक्त साहू आपको स्वागत करुच्ची जो आशा करा सरकार स्लाब रे परिवर्तन करि से आशा आमे समस्त देखुचे फलवती होउची प्राथमिक प्रतिक्रिया कौन रहिबो आपनकर नहीं मु भाबुची जहां हमें सब एक्सपेक्ट करूथिले मु इंडिविजुअली बहुत खुशी कारण मिडिल क्लास को जो उपेक्षित होइथिले से माने अनेक वर्ष धरी एजा गोटे बहुत बड़ सपोर्ट बहुत बड़ रिकॉग्निशन मिडिल क्लास को एवं जो डिस्टिंक्ट इम्प्रूवमेंट देखे आमे देखियो पाइलु 7 लाख रु 12 लाख बा लक्षे टंका पर्यंत जार इनकम अच्छी ताकू टैक्स देवाक पड़ो ना एवं तापर मध्य जो 12 रु 16 लाख 16 रु 20 लाख 20 रु 24 लाख ये जो स्लैब रे मध्य रिडक्शन करागला टैक्स इंपैक्ट कमे दियागला से वर्ष को जने लोक लक्षे रु 2 लाख पर्यंत जो बेनिफिट पाउची सेटा आसीबो जे कंजम्पशन बढ़िया पे मिडिल क्लास हाथ में अधिक सरप्लस रखा एवं जहाँ जहाँ आम आशा करुले बरं ताठू अधिका मिली एवं मु भावुची ए मध्यमित माने निश्चय खुशी रे सालेरीड लोक माने खुशी रे कारण तांको पई जो एक्सपेक्टेशन थिला एक्सपेक्टेशन को राजीव साहू आमे जो कथा आलोचना करुथिले होता सरकार मध्यवित्त को खुश करबा पई एभली गोटे बड़ घोषणा करिसंती बोली कहआ जिवो की निहाती दरकार थिला कारण से माने एटा तांकर हक थिला तांकर न्याय थिला एवं से माने मध्ये एथि पई जेतिकी तांकर कंट्रीब्यूशन थिला सोसाइटी को देश पई वर्तमान देश एवं सरकार तांको सेटा रेसिप्रोकेट करिसंती
तेणु यहीटा निश्चय मुझे जे जस्टिस मिडिल क्लास को दिया जाइए एवं जो प्रकार आम आशा करूँ से प्रकार बेनिफिट मध्यमित को आसी तेणु आम समस्ते खुशी मध्यमित खुशी रे मु भावी मध्यमित जो खुशी रे से देश खुशी कारण अनेक वर्ष धरी से जीटा बेनिफिट पाइबा कथा पाई नथिले आज किंतु सबू बेनिफिट जो गुड़िक पाई नथिले एवं आगामी दिन एगुड़िक कंपेनसेट होने निश्चय खुशी रहिबे। बिल्कुल एवं निश्चय ए होची बड़ खबर जदि जनकर रोजगार मासिक 1 लाख टंका पर्यंत अछि बा 1 लाख टंका अछि ताहेले मध्य से टिकस देबे नाही अर्थात वार्षिक 12 लाख टंका पर्यंत कोनोसी टिकस पैठ करबा पई पड़िबो नाही। एहा बाद मध्य टिकस लाभ रे अनेक परिवर्तन आसीची कारण पूर्वरु 15 लाख उपरे जदि रोजगार अछि 30% टिकस दबा पई पडुथिला जहाकु नै चर्चा हेउथिला एवं ए स्लैब रे मध्य परिवर्तन करा जायछि 24 लाख रु जदि अधिक टंका रोजगार अछि ताहेले 30% टिकस दबा पई पड़िबो जहाकु नै चर्चा करा जाउथिला बा अनुमान करा जाउथिला बजेट रे तारो प्रतिफलन आमे देखुचे। श्रीयुक्त राजीव साहू एहारो प्रभाव जनसाधारण को ऊपर किभली भाबरे पड़िबो देशर अर्थनीति ऊपर केमिति पड़िबो एवं केंद्र सरकार किछिटा टिकस आदाय हरई पारंती ए आकलन मध्य करा जाय पारे। देख एटा जो प्रश्न जे एटा साधारण रे निश्चय ग्रहणीय होबो मध्यमित गोटे बड़ सेक्शन से माने एथिरो बेनिफिटेड हेबे जो हासिल थिला जो 12 लाख पर्यंत जो टिकस रिटर्न फाइल करिया कथा सेथिरे मध्य कोल करा जायछि एटा कंजम्पशन बढ़ेबो तेणु सबु वर्गर मध्यमित जो आरंभ करी धनी एवं गरीब लोकों पई एटा गोटे जेतु डिमांड बढ़ौछि कंजम्पशन बढ़ौछि सेमाने मध्य एथिरु लाभवान हेबे एवं समस्त जेतेबेले खुशी रहिबे समस्तଙ୍କର जेतेबेले प्रोडक्टिविटी बढ़िबो कंट्रीब्यूशन बढ़िबो सेतेबेले देश मध्य खुशी रहिबो एवं जो 1 लाख कोटी टंका सैक्रिफाइस करूछंती सरकार सेटा मोर देन कंपेनसेट हबो अन्य बाटरे कारण तापरे जो जीएसटी जो कंजम्पशन करा जिवो सेथिरो जीएसटी मध्य आदाय करा जिवो इंडस्ट्री माने बेनिफिटेड हेबे सेमाने मध्य अधिक प्रॉफिट करिवे सेमाने मध्य अधिक टिकस देबे तेणु ओवरऑल आपण जदि देखिबे मो भाबुची सरकार खूब माने भलो आकार रे अर्थात राजीव साहू जहाँ सरकार का फोकस थिला लोकन को हाथ रे टंका रहू मध्यवित्त माने केमती उपकृत होई परिबे ताहा एथरो बजेट रे हमें कहि परिबा प्रतिफलन देखिबा को मिलिची निश्चय भावे सरकार सामग्रिक भावे इनफैक्ट बजेट को जदि देखिबे एटा गोटे बोधे 10 रु 10 मार्क पाइबो एवं ता संगे संगे ए जो डिमांड थिला जे मध्यमित एथिरु किभली उपकृत हेबे एवं सेटा को से माने सरकार खूब भलो भाबरे मध्यमित को रिकॉग्नाइज करूछंती मध्यमित को बेनिफिट मध्य देइछंती एवं सेथिरे सामग्रिक भावे अर्थनीति रे गोटे भलो परिवर्तन आसीबो गोटे सकारात्मक चिंताधारा रे गोटे सुफलन आमे देखि परिबा तार आउटकम रे ए जो बजेट रे एवं बजेट रे जो जो प्रावधान रही सेगुड़िक सबू ग्रोथ ओरिएंटेड आमर जेतेबेले विकसित भारत पाई जहाँ जहाँ दरकार बजेट तार प्रतिफलन आपण देखुचंती तेणु निश्चय स्वागत करिवे एवं बजेट रु बड़ खबर आसुची टिकस व्यवस्था रे आमे देखुचे एक बड़ परिवर्तन करा जायछि स्लैब रे परिवर्तन करा जायछि एवं ए संक्रांत रे अर्थमंत्री मध्य घोषणा करिसंती। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त राजीव साहू आपनक प्रतिक्रिया पाई। तेबे दर्शक बंधु देशवासी जो अपेक्षा रहिथिला अर्थात मध्यवित्त जो माने टिकस परिसरभुक्त थिले सेमानकर आशा थिला कि स्लैब रे परिवर्तन करि पारंती सरकार एवं तार प्रतिफलन देखुचे बड़ खबर हेउची 12 लाख टंका पर्यंत जदि आपनकर वार्षिक रोजगार अछि ताहेले कोनोसी टिकस पैठ करिबा पई पड़िबो नाही। टिकस संक्रांतीय घोषणा समय कौन कहिसंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आपण सुनि नियंतु। July 2000 tax regime. I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers
up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट को नहीं बड़ घोषणा करिसेंती एवं ये टैक्स को नहीं बड़ घोषणा करिसेंती इनकम टैक्स विशेष करके जो माने देखो आयकर दाता पई एक बड़ खबर बोली बिबु कहा जाय परिबो जेतेबे देखिबे कि 12 लाख टंका पर्यंत आ कोनोसी देखिबे कि आयकर देबा को पड़िबो नाही ता सहित बड़ घोषणा करिसेंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 12 लाख पर्यंत टैक्स फ्री कर दैछंती मोदी सरकार केवल सतिकी नुहे 12 रु 16 लाख पर्यंत 15% टैक्स दिया जिवो बोली घोषणा कर दैछि 20 रु 24 पर्यंत आय जो रहिछि 25% टैक्स देवा को अर्थमंत्री घोषणा करिसेंती जहां निश्चित भाव में कहि परिबा ये आयकर दाता को एक खुशी खबर आनी लंबा समय धरे ये चर्चा होउथिला कि टिकस परिमाण रे बा स्लैब रे परिवर्तन करि पारंती एवं तार प्रतिफलन आमे देखुचे आम सहित वरिष्ठ सांबादिक सुभाकर पटनायक रहउचंती तांको ठारु आमे विस्तृत भाव में बुझिबा कि एहार आवश्यकता केते थिला बा स्लैब रे परिवर्तन करिबारो एहा द्वारा जो वर्ग उपकृत हेबे सेमानकर संख्या कोन होई पारे सेमाने किभली भाव में लाभवान हेबे एवं देशर अर्थव्यवस्था को एहा किभली बूस्ट करिवो सुभाकर विस्तृत भाव में बुझांतु आवश्यकता एवं एहार प्रभाव सब कोन पड़िबो साधारण लोकंक उपरे देशर अर्थव्यवस्था उपरे। हाँ बिगु एक्चुअली मध्यवित्त वर्ग बहुत दिन दाबी करी आसुले जे तांकर टैक्स कर रिहाती दिया जाऊ जोटा को मोदी सरकार मानिचंती आ सुनिचंती से हिसाब रे से ए वर्ष टैक्स स्लैब रे भी परिवर्तन आनिचंती ए टैक्स स्लैब न्यू टैक्स रिजिम ये रे मिलियो ओल्ड टैक्स रिजिम रे मिलियोनी तो जो माने नुआ टैक्स रिजिम को आपणेबे से माने ही कर रिहाती पाइबे एई अनुसार सेमान को 12 लाख जाए टैक्स रिहाती मिलिबो प्लस या सहित 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन अच्छी 12 लाख 75,000 आय पर्यंत सेमान को कर दबा को पड़िबो नहीं याटू अधिक दर आय हेले सेमान को कर दबा पड़िबो या सहित सरकार टैक्स स्लैब रे भी परिवर्तन करचंती जोटा कि 20 रु 30% टैक्स स्लैब रोला ताकू भाग करी 20 रु 25 रु 30% टैक्स स्लैब का तैयारी करचंती गोटे नुआ टैक्स स्लैब करचंती या द्वारा मध्यवित्त श्रेणी रो मध्यवित्त आय वर्ग बहुत परिमाण रे लाभवान हेबे तांको हाथ रे अधिक संचय रहिबो से माने अधिक खर्च करि परिबे। सुधाकर जेतोले प्रधानमंत्री गत काली मध्य कहिथिले मध्यवित्तक हाथ रे लक्ष्मी रुहंतु मध्यवित्त मानकर क्रय सामर्थ्य रहू अर्थात मध्यवित्तक ऊपर फोकस करा जाई पारे एवं गोटे ये बड़ खबर एवं खुशी खबर आमे बोली बड़ गिफ्ट बोली कह जिवो केथरा बजेट मिलिछि एवं जेतेबेले 12 लाख टंका पर्यंत आए थिले वार्षिक आमे कहि परिबा 80,000 टंका ठी बंचिलानी। हां निश्चय एक्चुअली या बहुत दिन है दाबी रही से माने मुद्रास्फीति इनफ्लेशन बढ़ी दर वृद्धि बढ़ मध्यवित्त पाखे संचय रोना हाथ में पैसा आसुना जहाँ दरमा मिलता सरी जाता से बर्तमान यही टैक्स स्लैब वृद्धि द्वारा से पाखे किसी संचय रही हाथ खोला कर खर्च करेंगे निश्चित भाव में मध्यवित्त एक बड़ सरकार व्यय कही हम
सुभाकर जमी आम देखुचे बर्तमान नुआ टैक्स रिजिम रे जे माने जाउचंती से माने 12 लाख पर्यंत रोजगार पर्यंत कोनोसी टिकस देबे नाही किंतु ता सहित पुराना टिकस व्यवस्था प्रचलन रहिबो किंतु एई पदक्षेप कुहा जाई पारे कि लोकन को गुटे प्रकार आकर्षित करिवो ए नुआ व्यवस्था रे बा नुआ टिकस प्रणाली रे टिकस पैठ करबा पई मोटामोटी भाव में कुहा जाई पारे कि लोके धीरे धीरे पुराना व्यवस्था को भूली जिवे एवं नुआ रे एटीसी बा अन्य से जे सबुर आवश्यकता थाए तार कोनोसी आवश्यकता रहिबोनी। हाँ निश्चित भाव सरकार चाहते जे समस्ते सरल टैक्स रो सरलीकरण हो एवं सरल अति सहज टैक्स दे पारंतु से न्यू टैक्स रिजिम रो व्यवस्था कराई एवं सरकार मध्य चाहते समस्ते ओल्ड टैक्स रिजिम छाड़ी नुआ टैक्स रिजिम नियंतु से केवल नुआ टैक्स रिजिम रे रियायती दिया होची पुराना टैक्स रिजिम रे कोनोसी अधिक जहाँ पूर्व रही जाइए अधिक कौन रियायती दि जाऊना तो ये नुआ टैक्स रिजिम बल 12,75,000 टंका पर्यंत से कर देवा पड़ोनी कारण नुआ टैक्स रिजिम रे 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन अच्छी किंतु ता सत्वे जे पुराना व्यवस्था रे जीवा पई चाहूचंती पूर्व भली एटीसी हो बा शिक्षा लोन हो घर लोन हो ए सब रे ऊपर जो सब सुविधा पाउतिले बा छाड़ पाउतिले ता बलवत्तर रहिबो। हाँ जो मैंने ओल्ड टैक्स रिजिम रे सुविधा नवा चाहूँगी हाउसिंग लोन इंटरेस्ट हो एटीसी रे 1.5 लाख हो कि स्वास्थ्य बीमा उपरे 50,000 पर्यंत हो कि घर भड़ा उपरे नवा चाहूले रियायती नवा चाहते से ओल्ड टैक्स रिजिम थ्रू रे टैक्स फाइल करें तार सुविधा नहीं पारे सरकार दुईटी जाक व्यवस्था रखिंट ओल्ड टैक्स रिजिम एपर्यंत बंद कराई से बलवत्तर रही। सुभाकर बड़ कथा होची कि देश रे कर देबारे मध्यवित्तंकर गोटे बड़ योगदान रही एवं ये कहि परिबा सरकार जेतेबेले एबडी बड़ घोषणा करिसंती जहा द्वारा सेमानक भितर गोटे बड़ आश्वस्ति मिलिची काईकिना सरकार चाहिंचंती कि लोकंक हाथ रे टंका रहू फଳରେ सेमानकर गोटे क्रय सामर्थ्य मध्य रहिबो एवं जो कथा कुआ जाउतिला कि आयकर छाड़ सीमा 10 लाख टंका पर्यंत बढ़ी पारे किंतु सरकार देखिबा कि ता ठारो आहुरी खुशी बढ़ाई देइचंती तो ये आमा द्वारा भारतर अर्थनीति आहुरी सुदृढ़ हो बोली कुआ जाई परिबो कि। हाँ निश्चित भाव में या द्वारा अर्थनीति विशेष सुदृढ़ हम कारण लोकों पाखे जो अर्थ आसो से निश्चय भाव किसी नुआ जिनस किनिया चाहिए किसी अलग संचय करेंगे जो उभय माध्यम सरकार को परोक्ष व प्रत्यक्ष भाव में उपकृत हम और देशर विकास हम एन संदेह नहीं द्वारा बहुत अधिक संख्यक मध्यम वर्ग टैक्स फाइलिंग पई इच्छा प्रकाश कर आमे पूर्व व्यवस्था रे देखिथिले 15 लाख रु जो मानकर अधिक रोजगार थिला से मानक ऊपर 30% टिकस करा जाइथिला एवं से वर्गर लोके आमे देखुथिले अनेक समालोचना मध्य करूथिले तेनु से मानक पई मध्य आश्वस्ति कारण 24 लाख रु जदी अधिका रोजगार होची ताहले 30% टिकस दबा पई पड़िबो। हाँ 15 रु प्रथम 15 लाख ऊपर 30% थिला से स्लैब टाको भांगी देकरी 15 रु 20 लाख मध्य 20% 24 लाख पई 25% एवं 24 लाख अधिक आय उपर 30% सरकार करचंदी जहाँ एक निश्चित भाव अनेकों को खुशी करेबो कारण यह सेमानकर भी बहुत दाबी थिला जे एते कम आय ऊपर 30% कर देवा निश्चित भाव एक काठिकर थिला सेमानक पई ता सहित 25% गोटे नुआ स्लैब हैला। हाँ 20 रु 24 लाख नहीं कि गोटे नुआ स्लैब सरकार गठन करचंदी जोटे 25% कर देवा पड़िबो समान। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपन विस्तृत सूचना पाई एवं दर्शक बंधु बजेट क्यों सब बड़ दिग बा बजेट हेडलाइन